Shaheen Shah Afridi set the record in the Quaid-e-Azam Trophy when he took 8 wickets for 39 scores, the best ever by a Pakistani on a first-class debut. That's a big shot. Is there enough on it? There is. It might just go over there. Oh, and he's gone, the youngster. Oh, that's in the air. 3 wickets in the air. Oh, it's worth a shout. It's Andy. He can get 5. The very next ball. So he's on a hat-trick, but there's no more wickets. And what a way to finish. 17, 5 for 4. जी बिल्कुल अंडर 90 में मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग अच्छी की थी और उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास खेला फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस हुई जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की उसके बाद 3 साल में रिप्रेजेंट करना यंगस्टर के लिए एक अच्छी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया। Huge shot. Clean them up. Delivery. Short rising. Shaheen Shah Afridi got his career best figure in the Test as he picked up 10 wickets against the West Indies when the Pakistani team visited the West Indies in 2021. In the air. Victory for Pakistan. 10 wickets in the match for that man, Shaheen Shah Afridi. सबसे उसकी जो मेन वजह वो यही है कि वो ऐसा बॉलर है कि अगर बैट्समैन टाइम भी लेना चाह रहा है तो वे ही जस्ट बॉल्स फुलर अर्ली ऑन और इस तरह उसका बॉल अंदर आता है इवन इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्पेंड टाइम आप मिस कर सकते हैं अर्ली ऑन स्ट्रेट बॉल लेट स्विंग होता है वो किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किल है। ये उसका मेरे ख्याल से प्लान है ये उसकी बॉलिंग की आर्ट है जिस तरह वो पहले ओवर में आपको विकेट लेके देता है वो उसकी मेरे ख्याल से वो जो इन स्विंग यॉर्कर है वो आपके सामने है और जो परफेक्शन होती है वो हर एक का नहीं होता कि आप आके सिर्फ ऐसे बॉल फेंकें या उसको यॉर्कर कर दें वो परफेक्शन है स्विंग के साथ वो यॉर्कर लेंथ बॉल से अंदर लाता है। He did bowl very well with the new ball. I think he hit the right areas to pick up wickets. And in T20 cricket, you need good execution to pick up wickets with the new ball, and certainly he did that. So credit to him. He put our batsmen under pressure. Again, it's the slowness of the delivery that has deceived the Indian captain. And good. एज अ कैप्टन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहली दफ़ा कैप्टनसी भी कर रहा हूँ अपनी Jason Roy has it. Forward him. Oh, I think that's gone. Breaks it. It's a hard task, and it's made. Oh, he's launched that. But has he got it? Yes, he hit. Just gone. First ball back to Tim David. Tim David says whenever he goes to bat, right there. Watch this. Nice, beautiful, right at the base of the middle. That's high. Who's underneath that one? Who's going to take this catch?
कोशिश थी कि पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे 2021 में। अल्हम्दुलिल्लाह टीम की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और काफ़ी अच्छे मैचेस हमने जीते। हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दूँ और इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। जो हमारी करंट टीम है काफ़ी सपोर्ट करती है, एक दूसरे को जेल है और दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होते हैं। टेस्ट में जो मेरे 5 आवर्स है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे तो वो काफ़ी मेरे लिए होगी हिस्टोरिकल गेम था और इंडिया का मैच काफ़ी लोग देखते हैं, तो ये मेरे लिए 2021 में एक हाइलाइट्स थी कि हाँ इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ईयर गुजरा है। इंशाल्लाह 2022 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी इंशाल्लाह।